Assalamu alaikum guys, this is your teacher Dr. Noor Mohammed and I welcome you in AS level biology lecture series subject code 9700. Guys, as you all know that we are having our lecture series of right now chapter number 1 and 4 in combine, and we have already discussed uh, cell wall, cell membrane, endoplasmic reticulum, and Golgi apparatus in respect to the cellular structures. And we are continuing to study जो है ना cellular organelles like this. And in the last lecture, we were talking about mitochondria. I have started the discussion of mitochondria, as you can see on my board, that we have started the discussion of mitochondria in the previous lecture, and I've told you about, I've drawn a diagram only, and I've told you about the basic structural features of mitochondria. So just let me repeat quickly, and then उसके बाद फिर मैं आपको इनके points लिखवाऊंगा. Then we'll be talking about the functions of mitochondria and something called endosymbiont theory of mitochondria. ठीक है? So that is जो है ना, that will be the discussion of today's lecture. So as you can see here in my diagram, that mitochondria is also called as the powerhouse of the cell. It is titled as powerhouse of the cell, and this mitochondria is a special structure. It's a very special structure because it is going to give energy to the cell, and without mitochondria it's really difficult for a cell to survive. ठीक है, although we have red blood cells as an example जहाँ mitochondria नहीं होता, but वहाँ पर फिर क्या होता है, that's another question, and we will sort that question out inshallah in the transport and mammals chapter number जो आपका 9 है. Okay, sorry 8 है. Okay, here you can see the structures of mitochondria जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं. नंबर 1 वी हैव आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन, आउटर जो स्मूथ मेम्ब्रेन होती है आपके पास. इसके बाद फिर आपको इनर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इनर मेम्ब्रेन विच इज़ हाईली फोल्डेड एंड द फोल्ड्स आर देयर टू इंक्रीज द surface area of the membrane. Then we have a considerable space between outer and inner membrane, and that space is called as intermembranous space. And then within the intermembranous space, within the inner membrane of the mitochondria, what we see is large number of जो है ना, a granular fluid is there. A granular fluid is there, and that granular fluid is called mitochondrial matrix. And that this is the part of the mitochondria जहाँ पर most of the enzymatic reactions जो हैं वो चल रहे होते हैं. इसके बाद फिर जो मैंने दो स्पेशल फीचर्स माइटोकॉन्ड्रिया के बताए थे, वो कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ गॉट इट्स ओन डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ज़ाती डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ गॉट इट्स ओन राइबोसोम्स. ऑल्दो दीज राइबोसोम्स आर स्लाइटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और अटैच ऑन द surface of the rough endoplasmic reticulum. But that's quite true that mitochondria have got their own राइबोसोम्स. सही जी. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था. जस्ट क्विकली राइट डाउन कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, ठीक है, एंड देन फिर हम आगे फंक्शंस की बात करेंगे. तो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल. सेकेंड पॉइंट वुड बी देयर इज स्मूथ outer membrane. Third point is highly folded inner membrane. Okay. Folds are called cristae. Inner membrane contains lot of enzymes on its surface, like ATP synthase. I'll talk about it. ATP synthase. Then we have mitochondrial matrix, a granular
fluid enclosed by inner membrane, then we know now that they have got their own DNA, circular molecule of DNA, and the next point, they contain ribosomes of 70s units. There's a lot more to talk about it, बस मैं सिर्फ confined way में लिख रहा हूँ. तो these are the points जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बताए जाते हैं कि भाई दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, दैट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. नाउ दिस मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स लॉट ऑफ एंजाइम्स, यहाँ मैंने मेंशन किया है, लॉट ऑफ एंजाइम्स आर देयर. ये A2 का टॉपिक है, आप वहाँ पढ़ोगे कौन कौन से एंजाइम होते हैं, बट फॉर राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दैट दिस फोल्डेड मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ एंजाइम्स इंक्लूडिंग ATP synthase and there are other enzymes as well, and then enclosed by this inner membrane is a granular fluid, we call it mitochondrial matrix, and then we have written down that they have their own DNA and their own ribosomes, but the ribosomes are of 70s units, which is slightly different because I have told you in the last lecture that जो eukaryotic cells होते हैं, animal cells होते हैं, उनके अंदर जो ribosome होते हैं, ये होते हैं 80s units वाले. So just quickly note these points and inshallah then we'll move forward in mitochondria. We'll talk about the functions of mitochondria. Okay, just note it down. So simply तो जब हम explain कर रहे हैं functions को तो हम कहते हैं कि भाई they produces ATP, ठीक है ना, ATP generation होती है, powerhouse होता है, लेकिन how that occurs. तो basically ATP जो production है, जिसको हम respiration कहते हैं, energy production का जो reaction है पूरा, that involves actually 4 steps. That involves 4 steps actually, and that 4 steps are glycolysis, link reaction, Krebs cycle, and electron transport chain or oxidative phosphorylation. Don't need to worry, you don't need to remember exactly कि क्या है क्या नहीं है, or you will not be asked about all these processes, but you should know at this level that when we say energy production, so energy production usually occurs in these 4 stages. So there are 2 cells जो कि mitochondria के बगैर काम कर रहे हैं, and one of them is RBC and other is a sperm. अच्छा, अब जब हम ये कहते हैं कि स्पर्म्स डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात आपको समझनी है. वो क्या है कि अगर स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेंगे, अगर स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रियाज आएंगे वो स्पर्म से नहीं आएंगे, वो हमेशा कहाँ से आएंगे, ओवम से आएंगे, और हमेशा कहाँ से ड्राइव होंगे, एग से ड्राइव होंगे. एज स्पर्म्स डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, तो जब भी जाइगोट फॉर्म होगा बाय फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम और एग, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा जाइगोटिक सेल में, दैट मस्ट बी फ्रॉम ovum. So we say this, that mitochondria in any person is always inherited from the maternal side. Mitochondria are always inherited from maternal side. And my teacher used to say this, that as you all know that mitochondrial जो count है per cell, that totally depends upon the energy production or energy requirement of the cell. If your cell is working at a higher level, the amount of mitochondria per cell will be higher. So the thing which is important here and the thing which is crucial here, and my teacher used to say this, कि अगर आपका जो बच्चा है, बेबी है, वो ज़्यादा सुस्त है, लेथार्जिक रहता है ज़्यादा, I think it's just for fun, but it's logical as well. तो अगर आपका बच्चा जो है वो लेथार्जिक रहता है या वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, it can be some of due to some deficiency or pathology, but it is quite possible that उसका जो mitochondrial count per cell है वो कम है. एंड वो माइटोकॉन्ड्रियल काउंट पर सेल कम हो, क्यों है?
क्योंकि हो सकता है कि उसकी मदर का जो माइटोकॉन्ड्रियल काउंट पर सेल है वो कम था, तो या तो मदर उसकी डेफिशिएंट थी या तो सुस्त थी, लेथार्जिक थी। तो ही यूज्ड टू से कि भाई अगर बच्चा काहिल है ना तो इसका बायोलॉजिकली कसूर माँ है, कसूरवार माँ है कि माँ से माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट हुए हैं, और नंबर ऑफ सेल काउंट, जो नंबर ऑफ काउंट पर सेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिक्रीज थे जो यहाँ से मदर से इनहेरिट हुए अपना बच्चे के अंदर। तो इसलिए जो है वो फॉर द टाइम बिंग माइटोकॉन्ड्रियल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कम है, एंड दैट इज़ वाई बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता है। बट ऑब्वियसली दिस कैन बी चेंज बाय अडेप्टिंग द हाई एनर्जी एक्सरसाइजेज। तो फिर वो ऑब्वियसली बॉडी हैज़ गॉट द अडेप्टिव नेचर, और बॉडी में जो अडेप्टिव नेचर है उसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, उसको अडॉप्ट कर लेगी और माइटोकॉन्ड्रियल काउंट बढ़ा लेगी। ठीक है, तो दैट वॉज जस्ट फॉर फन। सो उम्मीद है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आया है, कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन भी आपको समझ में आई है। दैट्स नॉट ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। Now till this point I'm going to show you a video presentation explain the mitochondria animated। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का animated version आपको माइटोकॉन्ड्रिया में अभी देखने को मिलेगा। तो just quickly go and watch the mitochondria lecture and mitochondrial presentation, and when you will end the presentation फिर हम उसके बाद आपसे बात करते हैं। Mitochondria. A cell is the basic functional unit of life. Different cell organelles carry out specific functions of the cell and are essential for a cell's survival. One of the most important organelles found in a cell is the mitochondria. Mitochondria are known as the powerhouses of the cell and are only present in eukaryotic cells. As the name suggests, the main function of a mitochondrion is to generate energy in the form of ATP for the cell's various activities. Come, let's learn about the structure of a eukaryotic mitochondrion in this module. At the end of this module, you will be able to describe the structure of a mitochondrion. Mitochondria, an overview. Mitochondria are membrane-bound organelles and are one of the largest organelles found in the cytoplasm. They were first identified as bioblasts by German pathologist Richard Altmann in the year 1840. The name mitochondria was coined by Carl Bender in 1898. The mitochondria change shape rapidly. Therefore, mitochondria may appear spherical or tubular in shape. The number of mitochondria also varies from 1 to several thousand depending on the cell's energy requirement. Mitochondria are in constant motion inside the cell. They tend to move to regions of high energy requirement and can undergo repeated rounds of fusion and fission. The mitochondria have their own DNA and their own machinery for protein synthesis. They multiply by the process of fission, just like bacteria. General structure of mitochondria. Mitochondria are membrane-bound organelles and range from 0.5 to 1 micrometers in diameter. Mitochondria are made up of an outer and an inner membrane. The membrane is composed of phospholipid bilayer and proteins. The outer membrane contains large number of proteins called porins, which allow diffusion of molecules from one side of the membrane to the other. The space between the outer membrane and the inner membrane is known as the intermembrane space. The intermembrane space contains several proteins such as the cytochrome C or complex 3, which plays an important role in the electron transport chain. The inner membrane of the mitochondria is thrown into a number of folds called the crista. Crista increase the surface area of the membrane and provide a larger space for biochemical reactions to take place. The number of crista is not constant and can vary with the cell's energy requirement. Crista are studded with many proteins that are involved in the electron transport chain and ATP synthesis. The most important ones being complex 1, NADH dehydrogenase, complex 2, succinate dehydrogenase, complex 3, cytochrome BC1 complex,
complex 4 cytochrome oxidase and F0F1 portion of the ATP synthase enzyme protein. The space enclosed by the inner membrane is known as the matrix. The matrix contains a highly concentrated mixture of hundreds of enzymes required for TCA cycle, F1 portion of ATP synthase enzyme, special mitochondrial ribosome, and several copies of the mitochondrial DNA genome. The enzymes in the matrix and the ATP synthase complex help in producing ATP. Production of ATP is the most important function of mitochondria.